Assalamu alaikum students. I'm your principal course instructor Miss Anika Saidsia from University of Education Bank Road Campus Lahore, and your course is major course in painting thesis, and your course code is FINE 4125. First we will see the contents of major thesis project, which is a practical subject. Thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting. The students will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. To provide the student with specific working format and guidance during planning and preparation of the thesis exhibition. Today we are going to discuss about the lecture number 21, and today's topic is about the contemporary female artists of Pakistan. So Faiza Butt is a very famous Pakistani female artist, contemporary artist, and she thematically deals with masculinity, violence, and religion, attempting to understand each through a feminist lens. Constantly aware of gender and identity issues and her role as a female artist, she investigates a political motive for her art, which is experimental and universal at the same time. She derives a lot of her imagery from popular culture. As you can see, this is one of her famous paintings, and there are various symbolic elements and symbols hidden in her paintings. Memories of a time that never were two. This is the title of her painting. Her exhibition, Pehlwan, comes out of her experiences in the city of Lahore and the hyper macho culture of the inner city as a child. Many of her images are mugshots from newspapers and magazines depicting stereotypically masculine Muslim men. आर्टिस्ट जो है वो अपनी पेंटिंग्स में मैस्कुलिनिटी को और जो स्पेशली इन लाहौर सिटी में एक जो कल्चर है खाने पीने का भी, और जो एक मस्कुलर बॉडी जो है और एक मेल को एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग और रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी का समझा जाता है, तो उस चीज़ को जो है आर्टिस्ट ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, बट इन सम फनी connotations. This is another painting by her, and the title of the painting is Get Out of My Dreams Too. So as you can see in this painting, there are a lot of eatable things. आपको डिफरेंट किस्म की जो स्वीट्स हैं और डिफरेंट ईटेबल्स हैं, उसमें मीट भी है और डिफरेंट ईटेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ड्रिंक्स भी नज़र आ रहे हैं, और उसी के अंदर कुछ हिडन और आप कह सकते हैं कुछ ईवल थिंग्स हैं, सिंबल्स हैं, और कुछ टूल्स हैं, वेपन्स हैं, जिनको स्वीट्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है. These images allow her to not only look at the gender issues arising from such depiction, but also show concern regarding the Muslim identity in a global world. So, मुस्लिम आइडेंटिटी को, मुसलमानों को किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ में और वर्ल्ड में पोर्ट्रे किया जाता है और क्या
किस तरह का परसेप्शन होता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो उस चीज़ के ऊपर भी जो है आर्टिस्ट उसके ऊपर जो है उसको अपनी पेंटिंग्स में डिस्कस करती है. The inspiration for my work stems directly from my sense of identity, gender and cultural, and the times we live in. I create work by chancing upon potent journalistic images, text, encounters, and experiences as I conduct my affairs as an artist, a mother, and a woman. So, being a woman, being a mother, and being an artist, तो तीनों तरह के एस्पेक्ट्स को देखते हुए आर्टिस्ट जो है अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करती है. उसके बाद एक और आर्टिस्ट हमारे पास है, वेरी फेमस आर्टिस्ट आयशा खालिद, and she's a female contemporary visual artist working with miniature painting, textiles, video, and site specific installations in architectural spaces. Khalid is one of a generation of artists from Pakistan who have transformed the tradition of miniature painting into an internationally celebrated form of contemporary art. In recent years, Khalid's practice has extended to significantly larger paintings, murals, and installations. As you can see, there is an artwork, textile artwork by her, and this is a kind of installation which she has installed. और इसके अंदर आपको सारा नीडल्स के साथ काम हुआ हुआ नज़र आता है. अगर हम इनिशियल काम देखें आर्टिस्ट का, तो वो आर्टिस्ट जो है शी यूज टू डू एम्ब्रॉयडरी के अंदर आपको डिफरेंट सिंबल्स मिलते हैं, रोजेस मिलते हैं, जिसको आर्टिस्ट जो है वो फीमेल के साथ जो है रिलेट करती हैं कि जो वर्किंग फीमेल है, स्पेशली औरतें जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी का जो काम है वो तकरीबन हर औरत जो है उसको करती है और वो एसोसिएट होती है उसके साथ. और वो करते करते ही आर्टिस्ट ने जो है एक अपनी वोकेबलरी डेवलप कर ली है, विजुअल वोकेबलरी, जिसके अंदर टेक्सटाइल में जो नीडल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, थ्रेड एंड नीडल. तो जितना इमेज आपको नज़र आ रहा है, दे आर ऑल द पिन्स, ये नीडल्स हैं जिनके साथ आर्टिस्ट ने पैटर्न्स और मोटिव्स क्रिएट किए हैं. आयशा खालिद is among the revivalist miniaturists in Pakistan, engaging in the centuries old tradition to narrate contemporary political, socio-economic, and cultural tales. Her body of work offers a rich trajectory to include finely done miniatures to large-scale installations infusing elements as diverse as textiles and videos. As you can see on the right side, there are the bunches of needles. यहाँ पे नीडल्स हैं जिनको क्लॉथ के अंदर से पास किया गया है. और अगर आप बैक साइड पे देखें तो दीज आर ऑल पॉइंटेड नीडल्स, और फ्रंट से अगर आप देखें तो इनके साथ कोई ना कोई पैटर्न या ब्यूटीफुल एक इमेज क्रिएट हो रहा है. Why she is using specifically needles in all the textile? She's not using thread, she's using needles, and there is a specific reason that why she's intentionally using these needles. In her textile works, Khalid draws on a form of visual language embedded in Persian culture with its emphasis on pattern, color, and geometry, as well as incorporating designs from traditional चार बाग gardens. जो आपको मुग़ल मिनिएचर्स में एक टिपिकल चार बाग गार्डन नज़र आता है, वहाँ से हमें इंस्पिरेशन नज़र आती है आर्टिस्ट की. और स्पेशली ये पर्शिया से ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है चार बाग का. दैट्स वाई शी यूज टू मेक दैट चार बाग in her installations and paintings as well. These large-scale hanging tapestries embedded with thousands of long gold-plated pins show the confident hand of a miniaturist, together with her sensitive understanding of pattern making and her love of textiles. So, as you can see on the right side,
हमें एक जो टेक्सटाइल पैटर्न्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे बोट्स आपको नज़र आ रही हैं। तो एक ट्रेडिशन जो ट्रेडिंग का है, स्पेशली जो पुराना एक ट्रेडिशन था ट्रेडिंग का और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो भी चीज़ हमें यहाँ पे इमेजरी में नज़र आ रही है। The sharp pins pierce through several layers of cloth and add a three-dimensional sculptural element to the works, creating a tension between beauty and danger, pain and fragility. So, वो पिन क्यों यूज़ कर रही है इतनी पॉइंटेड नीडल, जो अगर चाहे तो किसी को चुभ भी सकती है, पेन भी दे सकती है, ब्लीडिंग भी कर सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहो तो उससे बहुत खूबसूरत और बहुत आप कह सकते हैं कि ऑर्नामेंटेड और एम्ब्रॉयडरी, आप कलरफुल एम्ब्रॉयडरी जो है, एक प्लीजिंग एम्ब्रॉयडरी और विजुअल आप क्रिएट कर सकते हो। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जक्स्टापोज किया है आर्टिस्ट ने अपने विजुअल्स में। दैट्स इट, थैंक यू।